जैसा आप सभी लोग जानते हैं, साहब की आज हिंदुजा Right, Chaiti, at 7 बजे के कुछ देर के बाद पीसफुल, शांतिपूर्वक एक अच्छे से उन्होंने इस दुनिया से हम लोगों से अलविदा कहा। सायरा जी, डॉक्टर की पूरी टीम और फैमिली मेम्बर्स सभी लोग इतराफ़ में थे। ऑफिशियली मैंने उसको ट्विटर पे 8:01 पे अनाउंस किया। और आप सब लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक फ़िल्म स्टार और एक अदाकार और एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और जितना भी मैं दिलीप साहब को जानता हूँ, मुझको हमेशा साहब की बातों से साहब अपने आप को एक आर्टिस्ट कम और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा पोर्ट्रे करना चाहते थे। उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी तकलीफ़ जो लोगों के लिए, उनकी भावनाएं जो दो लोगों के लिए थी, वो एक इंसानियत के लिए थी, अच्छे लोगों के लिए थी, अच्छे देश के लिए थी, देश के लोगों के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए थी। इसी तरह ट्विटर पे लोगों का जवाब आ रहा है। लाखों ट्वीट सुबह से आ चुकी हैं, हर किसी के आई हैं। इंडिविजुअल रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी फैंस, वेल विशर्स, साहब के मद्दाह, साहब के शुभचिंतक लोग को ये मैसेज शुक्रिया का पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी प्रार्थनाओं में साहब को हमेशा याद रखा, दुआएं भेजी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 8:30 बजे ही कॉल करा, सायरा जी से उनकी बात हुई। और हज़ारों लोगों के जो मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो तो आप सबको पता होगा ट्विटर पे। इससे हम लोगों को अब सिर्फ एक सबक है, एक लेसन हम सब लोगों के लिए, जो भी दिलीप कुमार साहब के शुभचिंतक हैं रहेंगे, कि एक well, Chaiti, at that this is in fact Dilip Kumar's media advisor. He is the one who does tweet from Dilip Kumar's official social media handle. He is thanking all the fans and saying that Dilip Kumar was at peace this morning when he passed on. Oh yes, absolutely. We heard him speak right there, the spokesperson. And Pia, also what's important here to note, and we just broke that story for our viewers as well, is that Maharashtra government has decided that the veteran legendary actor is going to get state funeral and last rites are going to be held at 5 p.m. Pia. Well, absolutely. In fact, you can see the kind of, the police bandobast that has been, here at his residence at Pali Hill in Bandra. The security has been beefed up. The media has been cordoned off. We've seen a lot of celebrities, including, Vidya Balan, Shabana Azmi, Dharmendra, who owes his career to Dilip Kumar. In fact, Dharmendra is one of the few actors who said that, it was because of Dilip Kumar that he actually came to Mumbai and started his career in the film industry and wanted to be an actor. Even today, you could see that, he was extremely emotional and teary when he left, the residence. And of course, Dilip Kumar will receive the state honors this evening at his funeral, which the procession of which will leave at around 5 p.m. from his residence. And, we can expect a lot of other Bollywood celebrities as well. We just saw, the CM of Maharashtra. And right now you can see, more people are pouring in. And a lot of, security as well as cars, convoys that are making their way, to meet Dilip Kumar, to pay tribute. Just now we just saw Sharad Pawar coming in to pay tribute and, of course, pass on condolences to Saira Banu, who's been a backbone to Dilip Kumar, so to speak. She's been with him through thick and thin. He's been extremely unwell over the past couple of years, and of course, more recently, over the past 1.5 months, he's been in and out of hospital almost 3 times, complaining of breathlessness, and she's been there every single day, even when he was wheeled out of the hospital the last time, and for that matter today as well, this morning. So yes, you can see a lot of people coming in to pay their condolences to Saira Banu. Absolutely. Pia, thanks for those updates right there.